Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. I just got back from university and before I get into other stuff, because I have these presentations and these assignments to cover up, I thought of reviewing this book like real quick. So today we're going to talk about Milk and Honey by Rupi Kaur. The first thing that I want to mention is it has this really beautiful cover in black and white, and it has these beautiful illustrations inside, and the illustrations make it really easy to understand the poetry or whatever is written inside. Like the illustrations, they complement the words that has been written down. So one thing that I want to talk about is that this the thoughts and the ideas that are presented in this book, they're really nice, and they're striking, but it's written poetically, but it's not poetry. I mean, I am a literature student and I have studied poetry and know what it contains. I have read a diverse number of poems and stuff like that. So I can say that except for few poems, this is not poetry. These are plain sentences without any literary devices, and just with some pauses. So it was not so intriguing for me. One thing more, that the content it has, it's way too, at times it was like way too sensuous and sensual, which was a bit, I would say, not my thing. And इसके अलावा इसमें repetition बहुत ज़्यादा है. मतलब this a single idea would be presented through several poems, and बार बार एक ही idea की repetition है, बार बार ही एक thought की repetition है, वर्ड्स की रेपिटेशन है. और इसके अलावा इसमें ऐसे आइडियाज़ के बारे में लिखा गया है जो कि मतलब दे आर कॉमन, एवरीबडी राइट्स अबाउट इट, एंड इट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू फॉर मी. सो अगर कोई ऐसा बंदा जो कि पोइट्री ज़्यादा नहीं पढ़ता और स्कूल के बाद कुछ उन्होंने नहीं पढ़ा हाई लेवल पे, तो आई गेस उनके लिए ये बुक अच्छी रहेगी, मतलब दे विल एन्जॉय इट. लेकिन आई हैव रेड सम रियली गुड पोइट्स एंड उनकी पोइट्री मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मेरे लिए इतना इंट्रीगिंग नहीं था. लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम दिस बुक. जो बिल्कुल इसमें फर्स्ट पोम है, आई गेस ये सेकेंड पोम है, दैट वाज रियली मूविंग. तो कुछ एक्सेप्शंस के अलावा मुझे जो है इसके पोम नहीं, बिकॉज दे आर नॉट पोम्स, लाइक टू बी ऑनेस्ट, दे आर सिंपल वन लाइनर्स दैट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लाइन्स. और इसकी जो हमारे पास जो पोइटिस हैं रूपी कौर, ये शी यूज टू पोस्ट हर पोइट्री ऑन इंस्टाग्राम, एंड दैट इज़ हाउ शी गॉट फेमस, एंड देन लेटर ऑन शी पब्लिश्ड दिस बुक हर सेल्फ. सो ये बात है. तो ये पढ़ के वैसे मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने पोम्स जो है वो पब्लिश कर लूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, बिकॉज आई फील एंड आई yeah, I feel like my poems are better than hers. And इसके अलावा, like let me show you guys पेज जहाँ से आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा what I'm actually talking about. Let's say, okay, look at this. This is the poetry, one liner, like it's just one line, you see. इसके अलावा वी हैव हर एक पेज पे अगर देखो तो वो विद द एक्सेप्शंस ऑफ वेरी फ्यू यू वुड सी दैट यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे लाइक वन लाइनर्स हैं, यू सी, इट्स जस्ट वन लाइन. तो ऐसी बुक्स जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगती, और it's just not up to the mark or up to the hike that it don't deserve that much. So I'll give it 2/5, 2 out of 5 stars. So that was a very quick review, and now I gotta go, and I'll see you guys in my next video. Thank you.